Hey guys, hi, good morning. Sorry, evening actually. Good evening, guys, and welcome to Unacademy Let's Tech Foundation on NTC channel. I hope all of you are doing really well. If that is so, quickly drop a 5 in the chat box so that I know all is good, all is well, and we are ready to start with our quiz on previous year questions of NTSE biology. Come on, guys, show some energy. Quickly come live in the chat box. And don't forget to invite your friends. अपने दोस्तों को बुलाना मत भूलना because we got to do a lot today, right? So come on, guys, quickly, everyone, fatafat join the class. I can see some students. Uh, okay, yes. Good evening, Simran. Hi. Okay, guys, our test has been released on the Telegram. Telegram पे एक test release हो चुका है. Samyak, hi. Good evening. After some time, all is well, I hope. सब बढ़िया, सब चंगा. Okay. Guys, गुड इवनिंग मेरा आकृति गाइज ये प्रैक्टिस टेस्ट आपका टेलीग्राम पे अवेलेबल है राइट दिस प्रैक्टिस टेस्ट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द टेलीग्राम और फ्रॉम द यूट्यूब कम्युनिटी और यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस बार कोड आप इस बार कोड को भी स्कैन कर सकते सॉरी नॉट बार कोड QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो टू अटेंड द टेस्ट राइट इट विल टेक अराउंड 20 to 25 minutes एंड इट्स ऑन लाइव प्रोसेसेस ठीक है Okay. Give exam. Aha, school exams. So guys, you can track all of these videos by using the tracker. Tracker का link भी ऊपर डला हुआ है, right? So guys, welcome to Unacademy. Let's crack foundation NTC channel. And remember, अगर आपने अभी तक app download नहीं किया है, तो go and quickly do that because there's a lot that can be learned there as well. ठीक है? So guys, routine you already know. सुबह recorded, रात को live, special at the rate 3 p.m. plus at the rate 4:30. Telegram, Sona Singh Unacademy, and tracker you already are aware of. ये schedule था. Now I think we have finished today, right? आज खत्म हो गया हमारा ये week. अगले week का schedule भी update हो जाएगा. Do check out Emerge. Emerge is based on Term 1 exams. You'll get detailed performance reports, video solutions, and even all India rank. और क्योंकि ये Term 1 पे based है, तो it will help you to prepare really well in exam. ठीक है? All you need to do is download the app and use the unblocking code SONA05. ठीक है? Okay, cool. You already know about Plus. You get into a well-structured course, top indicators, doubt clearing sessions, live test. You get mentorship. पूरा का पूरा syllabus खत्म होता है anytime, anywhere. No wastage of time as well. There's a ton of courses available on Unacademy Plus. जैसे ये कोर्स काफी पुराना है, but अभी अभी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, सारथी. Now सारथी is going to cover term 1 topics, but CBSE से लेकर NTSE तक, right? And all of your foundation faculty, they're all there. So इसको तो मिस नहीं करना. It's very simple. पहले select the category, दूसरा select the longest month महीना. उससे क्या होता है कि आपका per month price घटता है, and then use the code SONA05. कोड यूज करते instant 10% discount. ठीक है? So guys, also to help you people further, we have also this Unacademy का combat, जिसमें 3 अक्टूबर को एग्जाम होगा 1 बजे 60 मिनट 30 questions science and maths. You have to attempt only from the Android app, right? Use the unlocking code SONA05, no registration charges. मिलेगा क्या? Scholarships. So higher the rank, the more the scholarship, right? So we have a great huge pool of 10 lakh students. Do not let this opportunity go. Combat बार नहीं आता. So remember 3rd October, and when well that's going to happen at 1 o'clock. ठीक है? All you need is the code SONA05. This is the syllabus. The syllabus is also available on the Unacademy app. ठीक है? चल. Are we ready for the class now? Okay, let's look at the comments. So why you wear watch at home? It's not a watch, it's like a health tracker, and I just was doing some exercises before this, so I had it on and then I carried it to the class, right? Okay, this is not Apple, this is Fitbit, not Apple. Now I'm not supposed to talk about this. Let's go and get started with our mentee. Where is mentee? Yeah, mentee. Guys, just give me a moment and I'll share you with you the mentee code. Mentee. Yeah, mentee. Yeah. Guys, can you all get the code? Sir, can I attend the test now? After the class कर लेना. Monday तक है. Guys, Monday रात तक कर लेना. Tuesday को solutions release हो जाएंगे और Monday रात को I will close the thing. Ah, that's great, Simran.
Okay, I am not about to allowed to talk about that. So let's focus. Okay, everyone focus. So guys, जल्दी जल्दी कोड से ज्वाइन कर लो. Hi Shravan, good evening बेटा. Come on guys, weekend is around us. Let's kick off this weekend with a great blast and a great quiz. Some old questions, some new questions. Don't worry. I'm waiting. I'm waiting. No hurries here, right? No hurry here. Come on, go ahead. प्रेम सर आप मटेरियल प्रोवाइड करते हो फॉर प्रैक्टिस Okay. Through my lessons, we have a lot to practice. Going ahead, there would be tests. हर हफ्ते आपको कोई ना कोई टेस्ट मिलते रहेगा. But again, you have to be consistent, right? So throughout the October, I have decided it to be a testing October. So we'll be having a lot of tests this uh, month. ठीक है? चलो. I'm going to start, guys. I'm going to start. Cool. So I have four people. I have four people, not nice. And why did the description come along? I have no idea. Chalo. Starting with the very first and easy question, and don't worry, 37 questions ko dekh ke ghabarana mat. With a very easy question, the word sapiens, what does it stand for? What does the word sapiens stand for? And guys, कुछ questions बहुत easy, कुछ questions थोड़े difficult, but it all takes just a tiny bit of time. राइट एंड बायो के क्वेश्चंस को आप जितना कम टाइम में खत्म करेंगे इट इज गोइंग टू बी दैट मच ऑफ एन एडवांटेज वेरी गुड द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस के दो हिस्से होते हैं जीनस द फर्स्ट पार्ट स्पीशीज द नेक्स्ट पार्ट जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं व्हेन दे आर प्रिंटेड दे आर इन इटैलिक्स व्हेन दे आर रिटन दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली ठीक है डोंट वरी बेटा क्लास 9:30 तक नहीं चलेगा क्लास वुड बी लाइक 9 to 9:15 तक खत्म कर देंगे डोंट वरी आई विल नॉट हैव यू मिस योर फिजिक्स क्लास डोंट वरी ठीक है 9:15 कोड सारा आई लेट यू नो द कोड आफ्टर दिस ठीक है अभी अगर मैंने हटाया ना तो क्वेश्चन भाग जाएगा जस्ट अलाउ मी दिस क्वेश्चन उसके बाद मैं आपको कोड दिखा दूंगा दोबारा ठीक है सारा ओके इन एनिमल किंगडम द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग द बैकबोन्स पहला ऑर्गेनिज्म क्या है जो बैकबोन का इस्तेमाल कर रहा था गाइस कोशिश करो कि आप मेंटी में आंसर करो राइट एंड गाइस दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ आवर स्पेशल क्लासेस क्योंकि उसमें इनबिल्ट फीचर होता है यू डोंट हैव टू एवरी टाइम स्विच सो गाइस बैकबोन्स vertebrates आपको याद होना चाहिए that if we classify chordates we have protochordates the first chordates and then the next class is vertebrata or craniata right vertebrata और craniata vertebrata को भी हमने divide किया था and finally you have the fishes that is where the true backbone started शुरुआत में वो कार्टिलेजिनस था फिर धीरे धीरे इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू बोनी राइट सो द ट्रू वर्टिब्रल कॉलम स्टार्टेड फ्रॉम देयर गाइस दिस इज अ कोड जिन लोगों ने भी कोड नहीं देखा था फटाक से नोट डाउन कर लो गाइस कैन समवन प्लीज नोट डाउन द कोड अगर कोई मांगे तो बीच में दे देना प्लीज समवन नोट डाउन द कोड 38142394 सर बेटा बेटा आपका आपका कमेंट रिट्रैक्ट हो गया समय कुड यू पोस्ट इट अगेन आपका कमेंट वाज रिट्रैक्टेड थैंक यू सो मच सिमरन बेटा चलो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन सर व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म आई थिंक इट इज underdeveloped gonads but I'll be on the detail later on I think it is underdeveloped यार मेरा कैमरा बस ना हिले हाँ I think it is underdeveloped gonads but I'll talk about that थोड़ा बाद में ठीक है Go ahead. Which of the following is a connecting link between aves and reptiles? Sir, synapsids and diapsids both came from fishes. Yeah, sort of. They later evolved into that. So, जब तक skull was the first thing that came there, right? So, cranium, craniata आने के बाद ही आपका synapsida या diapsida आएगा. Yes, right? Because those were the first people. So, yes. Come on, guys. Next question. Connecting link. Aves and reptiles.
वेरी गुड. सो वी हैव द आर्कियोप्टेरिक्स. सो आर्कियोप्टेरिक्स एव्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसलिए है बिकॉज इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ. It has wings like birds. It has, it has, but it also has teeth. It has got a tail. तो in some ways it is like a reptile. कुछ मामलों में वो reptile की तरह है, कुछ मामलों में it's bird की तरह है, right? So I think the answers are marked in the images. No. What I have done is कि originally because these are screenshots of question papers, तो कुछ answers marked हैं, तो I have tried to erase those marks. और by the way, क्योंकि ये बच्चों के answers हैं, do not go on that because कभी काल वो गलत भी होता है. Yes, exactly. So some answers are wrong, guys. And what I have done is मैंने जब भी आंसर मिटाया मैंने सबको मिटाया है. और I might have done something mischievous just to throw off on you off on the wrong answer. तो प्लीज उस हिंट पे मत जाना. कभी कल मैंने जानबूझ के शैतानी की है. ठीक है. So while I was editing those out, I might have done some things like that. So don't go on that. चलो. Pteridophytes plants can be better described as. So we know five types of plant: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, and Angiosperm. These are the five types. Sir, Tiktaalik क्या है? Tiktaalik is a fossil that is a transition to tetrapod. ठीक है. Tiktaalik एक फॉसिल रिकॉर्ड आर्कियोप्टेरिक्स का ही मिला जो आपका फिश और एम्फीबियन के बीच का लिंक लगता था. ठीक है. सर आपकी वॉइस बहुत गाय. Sorry, I was not wearing my microphone. Thank you so much, Ajay. My bad. Sorry, I was not wearing my microphone. My bad. I'm so sorry. Guys, you could have told me, no? Why didn't anyone tell me? And I was like, you know, consciously I was like कि आज चिल्लाना नहीं है, धीरे धीरे बोलना है. Because I was like कि आज तो मैंने boost कर रखा है. ठीक है? Okay, I wasn't wearing my microphone. Sorry, my bad. ठीक है. I forgot what the question was. Sir Simran again. Okay, okay, guys, focus. Fifth question on to you. Fifth question, guys. Jaldi se switch back karo. Fifth question. Come on, guys. Come on. A flagellum is present at one end of a protozoan. It is. Uh-oh. Sorry, my bad. एक flagellum है on the one end. Which one that is? Sir, I am first in your class. अब सर कहाँ से start करूँ? मैं समझा नहीं बेटा. कहाँ से स्टार्ट करूं मतलब पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करूं? फॉर दैट द ट्रैकर्स हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इवन ऑन ईच ऑफ दीज स्लाइड्स. अगर आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूं तो ओके. सो हम सबको पता है लीशमानिया और ट्रिपैनोसोमा ये दो एग्जांपल्स हैं जो हमेशा आपको आएंगे, राइट? सो यू कुड गेट लीशमानिया और ट्रिपैनोसोमा इन योर आंसर्स बेटा. बायो पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करूं बेटा? विच ग्रेड यू आर? अजय, आप कौन सी ग्रेड में? इफ यू आर इन 10th ग्रेड, स्टार्ट फ्रॉम 10th और 9th को रिवाइज करते रहो. अगर आप 9th ग्रेड में है सो यू कैन स्टार्ट विद 9th एंड कीप ऑन अटेंडिंग लेक्चर्स जो 10th के भी हैं, बिकॉज एनटीएससी में कुछ 9th नहीं है, कुछ 10th नहीं है. ठीक है. यू आर इन 10th तो 10th को पढ़ो और 9th को रिवाइज. सर फ्लैजेला तो एक एंड पे ही होता है ना? नॉट नेसेसरी. आप 11th में जाके पढ़ोगे. यू हैव एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है श्रवण, आप लोफोट्राइफस, एम्फीट्राइकस ऐसे ऐसे टर्म्स पढ़ोगे तो उस केस में मोर देन वन प्लेसेस पे भी हो सकता है. ठीक है. डाइनोफ्लैजिलेट्स में बड़ा वियर्ड तरीके से होता है, ग्रूव्स में समेटा हुआ होता है, राइट? यस, डाइनोफ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टेंस. सो एवरी वियर्ड थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट, बायोलॉजी सेज यस आई एम देयर, राइट? सो गाइज ये याद रखना, यू कांट सेट अ रूल इन बायोलॉजी. हर चीज में अजीबो गरीब तरीके की आपको चीजें मिलेंगे. Okay, guys. Next question. You're observing a non-chlorophyllous eukaryotic organism with a chitinous cell wall under a microscope. You shall describe the organism as dash. यूग्लिना में तो एक ही तरफ होगा ना बेटा, एक लंबा और एक छोटा. दिस जस्ट टू आकृति, राइट? दिस जस्ट टू आकृति, बस दो है. सो गाइज आपको एनटीएससी लेक्चर्स इजी लगेंगे, आईबीओ लेक्चर्स थोड़े ऊपर लगेंगे, आईजेएसओ लेक्चर्स थोड़े बीच में लगेंगे. सो थोड़ा सा ऐसे ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा. ओके. सो नॉन क्लोरोफाइलस मतलब क्लोरोफिल नहीं है.
काइटिन का सेल वॉल है, यू नो काइटिन इज फाउंड ओनली इन फंजाई, और इट कैन ऑल्सो बी द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है सर, कोई कहता है क्रोकोडाइल एम्फीबियन होता है, कोई कहता है रेप्टाइल्स। बेटा, इट्स अ रेप्टाइल, इट्स नॉट एट ऑल एन एम्फीबियन, इट्स अ रेप्टाइल। So which is the longest river of Bihar? Guys, for your kind information, I am literally poorest in GK and I have a really bad memory. If it is not Ganga, I'm so sorry. Sir, I had a doubt in giraffe evolution. Sir, did the variation in the Sir, I had a doubt in the giraffe evolution. ठीक है. Did the variation in the entire stroke value and the increased neck size? एक second. Did the variation in the entire stroke volume और इस समय कुछ occur at the same time? अच्छा. Did the variation in the stroke volume and the increased neck size? Okay. देखो, many a times मैं समझ गया समय got your point. बेटा, बहुत बार ऐसा होता है that we think as events as exclusive मतलब अलग अलग. For example, um, I'm teaching and I know to speak English. I'm teaching and I know to speak English. अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज आई हैव टू यूज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर इन इंग्लिश. अगर मुझे बायो नहीं आता तो भी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता. सो बोथ ऑफ इट हैज टू गो हैंड इन हैंड. अगर मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, बायो नहीं आता, नहीं पढ़ा सकता. बायो बहुत आता है, लैंग्वेज नहीं आता, नहीं पढ़ा सकता. सेम थिंग्स अकर्ड इन जिराफ. If there was one variation that allowed a greater sized neck, एक वेरिएशन अगर ऐसा आया जिसमें नेक बड़ा हुआ होगा, it must only have given an advantage. वो तभी और तभी एक एडवांटेज देगा जब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि अगर वो एडवांटेज नहीं दी, अगर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वो डिसएडवांटेजियस होगा. क्यों? वो उतना दूर तक पंप नहीं कर पाएगा. इट वुड बी लाइक अगर मैं ब्लड ही नहीं भेज पाऊंगा, तो फायदा क्या ऊंचा गला होने का, राइट? तो आई विल डाई. तो गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. जस्ट गिव मी वन क्विक मोमेंट, ओके? सॉरी गाइस, सॉरी. ओके, सो इसीलिए यू हैव टू हैव द टू थिंग्स कपल्ड टुगेदर. आपको हमेशा इन स्टेप चलना है. अगर एक स्टेप ज्यादा ऊपर चला गया, फायदा ही नहीं है, वो एडवांटेज देगा ही नहीं देगा. ठीक है? सो इट हैज टू गो हैंड इन हैंड. ठीक है सर? बट सर, यू आर फ्रॉम बिहार. बेटा, आई एम फ्रॉम बिहार, बट ट्रस्ट मी, आई हैव वेरी बैड मेमोरी. मेरी मेमोरी सच में बहुत खराब है. सो guilty here. Okay. Crocodile is an exceptional reptile because it has 4 chambers in the heart. That is totally true. बिल्कुल सही बात. ठीक है? Okay. Moving ahead, guys. Typo error. Okay. Nice. चलो. Moving to the next question, guys. Question 7. Okay. I must have given you extra time for this one. देखो, दो तो आपको आराम से आते हैं, right? Flightless bird, right? एंड एग लेइंग मैमल. आई थिंक ये दोनों आपको बहुत आसान से आता है. सो जनरल रेप्टाइल में कितने हार्ट होते हैं? 3. अजय, 3. बट ओनली क्रोकोडाइल्स, द क्रोकोडिलियंस, दे हैव, इवन टॉर्टोइस इट हैज 4, राइट? सो क्रोकोडिलियंस, it's a group of organisms, not just crocodiles, even alligators have 4, so they have 4. now अब देखो, मुझे दो तो एकदम अच्छे से पता है. एग लेइंग मैमल हैज टू बी आपका एकिडना, राइट? हमने पढ़ा था डक बिल्ड प्लैटिपस एंड एकिडना, राइट? डक बिल्ड प्लैटिपस एंड एकिडना, दे आर
प्रोटोथीरियंस, राइट। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। अब मेरे पास बचा था एक्सोसीटस, दैट इज अ फ्लाइंग फिश। मुझे बस ये याद था, इसीलिए मुझे हो गया। तो कभी कभार आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा। चमेलियन, इट्स अ रेप्टाइल, यस। ओके सर, आपकी डेली क्लास लगाऊंगा, दैट्स परफेक्ट बेटा। बट देखो अब जो है ना, ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुका है, तो अब बहुत ज्यादा रिवीजन होगा। तो आप कंटेंट भी देखते जाओ, पास्ट कंटेंट, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत टाइम था, तो हमने एकदम आराम आराम से पढ़ा है। अब जो है, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ पिक अप पेस। आई हैव ऑल दीज क्वेश्चंस इन माय फाउंडेशन बायोलॉजी बुक बेटा, बिकॉज दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर स्टेज 2 का ट्रैकर दे दीजिए बेटा, स्टेज 2 का अभी ट्रैकर बनेगा, ठीक है। Sir, another doubt, how can genes determine those facial things? Like we say that eye size is small and stuff. I understand height and pigments, but size of physical features. Okay. Uh, See, growth is controlled by transcription factors and hormones. For example, let's take a very easy example. Height of an individual. एक स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल लेते हैं, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल समय। अगर मेरे पास ग्रोथ हार्मोन कम है बिकॉज ऑफ अ जीन दैट डजंट सिंथेसाइज अ वेरी गुड ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, मेरा हाइट छोटा होगा, राइट। सेम वे एनीथिंग हैज टू ग्रो, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जीन अगर सही नहीं है, दैट मीन्स द ग्रोथ वुड बी लेसर, राइट। सो अ लॉट ऑफ weird biochemistry, complicated biochemistry comes into play. ठीक है, IJSO crash course on YT, please. Guys, right now we are working on releasing two courses. One is for NTSE stage 2 and one is for IOQJS/IJSO. We'll soon release all the information about it. But right now, अभी पढ़ लो। सब बायो में भी इक्विलिब्रियम होते हैं क्या बेटा? बिल्कुल होता है, आपके कानों में इक्विलिब्रियम होता है, राइट। द इंटरनल ईयर that maintains your equilibrium. बेटा एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसीलिए आई ऑल्सो रिलीज आईबीओ क्वेश्चंस बेटा, राइट। आकृति, मैं इसलिए आईबीओ क्वेश्चंस भी रिलीज करता हूँ। इस बार तो आपको वो टेस्ट के फॉर्म में भी मिलेगा। सो द मोर यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड सी देयर सॉल्यूशंस, उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस भी होगी। सो एनिमल इज केप्ट इन जार, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सीलोमिक कैविटी है, एंड द बॉडी इज सेगमेंटेड एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, राइट। हमें बस एक ही चीज देखना था, जॉइंट अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा, राइट। जॉइंट अपेंडेजेस इज ओनली आर्थ्रोपोडा, ठीक है, वो आते ही आर्थ्रोपोडा हो गया। सर 10th के बाद कोटा ठीक रहेगा जाना? बेटा देखो, देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब पीपल वर डिस्कनेक्टेड, बट इंटरनेट हैज मेड थिंग्स रियली स्मॉल। सो आई विल नॉट से कि कहीं जाओ या कहीं नहीं जाओ, बट हाँ, सब चीज को ट्राई करो एंड देन फिगर इट आउट। सो व्हाई डोंट यू शेयर योर कूल मोमेंट्स ऑन टेलीग्राम लाइक राहुल सर? I'm a very boring person, Ajit. So I try to, but I'm really boring person, sort of. Pressure equilibrium in middle ear via registration tube also found, not exactly बेटा। सम्यक जो प्रेशर इक्विलिब्रियम है, वो आपका बैलेंस में ज्यादा नहीं होता जितना योर इंटरनल ईयर डज, राइट। सो इट इज there are parts inside the internal ear that does the job. वो जो प्रेशर है, इट्स नॉट अ बिग पार्ट ऑफ इट, ठीक है बेटा। सेगमेंट्स हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस बेटा, जॉइंटेड अपेंडेजेस श्रवण, जॉइंटेड अपेंडेजेस वो आपका सिर्फ आर्थ्रोपोडा के पास होता है। नॉस्टॉक एंड बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट में नहीं लिख पाया था, सो आई डोंट नो दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कैन एनीवन टेल मी? गाइस कैन समवन टाइप द दूसरा स्टेटमेंट, आई कुड नॉट रीड इट, उसके पहले वो गायब हो गया। तो राइबोसोम को मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है जबकि वो प्रोटीन से, राइबोसोम को मेम्ब्रेन लेस क्यों कहा जाता है जबकि वो प्रोटीन से बने होते हैं? बिकॉज इट इज covered by, it is a body made up of RNA and proteins. It is not having lipid ka membrane. Membranes are made up of
फॉस्फोलिपिड्स वो नहीं है, इसीलिए। ठीक है, नॉस्टक इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज वेरी ट्रू। बेटा सेकंड स्टेटमेंट क्या था? स्पाइरोगाइरा एंड पेनिसिलियम आर फंजाई। आपको पता है स्पाइरोगाइरा प्लांट था, राइट? स्पाइरोगाइरा प्लांट है, पेनिसिलियम इज फंजाई, दैट इज ट्रू। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं, बट पढ़ना होगा। पूर्वा अभी आई जस्ट शोड, थैंक यू सो मच अजीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट उसके पहले डायनिक सा लीडर बोर्ड है, काफी चेंज हो रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ग्रेट, काफी गुड। ओके बेटा, पूर्वा अभी अजीत ने टाइप किया ना बेटा, पूर्वा अजीत जस्ट टाइप्ड इन द कोड, देखो 38142394, अभी अभी जस्ट टाइप किया अजीत ने, यू कैन जॉइन इन फ्रॉम दैट, वही कोड है बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 37 बेटा। ओके, बिग क्वेश्चन, हर्बेशियस प्लांट, यू हैव टू टॉक अबाउट सेकेंडरी होगा या नहीं, फ्लावर्स 3 होंगे या नहीं, टैप रूट होगा या नहीं, 2 कॉटलेडेंस होगा या नहीं। गाइज, एक और चीज, I'll just tell you about it in some time. Just allow for some time. I'll tell you about this specifically. Aditya का एक question है, is it okay to study and understand with class notes for Olympiads or classes are better? बेटा देखो, आई थिंक यू बिलीव, शायद आप लोगों को ऐसा लगता है दैट नोट्स आर स्टडी मटीरियल्स। आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ। नोट्स आर नॉट एब्जॉर्प्शन टूल्स, दे आर स्टडिंग टूल्स। नोट्स जब आप बनाते हैं दैट हेल्प्स यू, नोट्स जब कोई और आपको बना के देता है, इट्स एन एब्जॉर्प्शन टूल, इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, राइट? यू रिमेंबर थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग इट, राइट? ऐसे ही बोलते हैं, राइट? दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो अगर आप नोट्स से पढ़ रहे हैं, आई वुड से मेक योर ओन नोट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, ओके, वंस अगेन आई डेंट सी द क्वेश्चन, आई डोंट हैव द क्वेश्चन, आई टेल यू ब्रीफली कि था क्या। सो आपको पता है दैट मोनोकॉट्स हैव जस्ट वन कॉटिलेडन, दे आर ट्राइमेरिक, यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स वुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड दे डोंट हैव 2 कॉटिलेडन्स। आई थिंक जो फर्स्ट आंसर था उसमें 2 करेक्ट चॉइसेस थे। दे हैव फाइब्रस रूट सिस्टम, दे हैव जस्ट वन कॉटिलेडन, दे आर ट्राइमेरस एंड दे हैव पैरेलल वेन्स, राइट? सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आपको सभी प्रॉपर्टीज याद करना पड़ेगा। Guys, I want you to show one important thing. Is it visible? Yeah. Guys, is this visible? Is it visible? So guys, I keep on updating the trackers. तो इस बार जो है हाउ टू ड्रॉ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, ये सब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट? हर हफ्ते ये अपडेट होता है, एवरी कैटेगरी। अभी आप देखो तो जो आपके आ, आने वाले आने वाले आने वाले आईबीओ क्वेश्चंस है, उनका भी गूगल फॉर्म्स यहाँ अपडेट हो गया है। अभी आई हैव नॉट ओपनड इट, राइट? अभी आई हैव नॉट ओपनड इट, जब ये खुल जाएगा देन यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पे देखो अपडेट हो चुका है, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रैकर्स यू कैन लिटरली स्टडी एनटीएससी एनएसईजीएस। यहां से आपका जो ट्रैकर लिंक है वो इधर से खुलेगा, राइट? और ट्रैकर लिंक के नीचे कई सारे और ट्रैकर्स हैं, यहां से यू कैन ट्रैक ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट? सो मेक श्योर आप ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? देन ओनली इट्स बेनिफिशियल। ओके बेटा, दिस इज अ फॉल्सहुड, ऐसा नहीं है रोहित, आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स बनाने वाले हैं, दिस इज अ फॉल्सहुड एंड रोहित यू आर स्पैमिंग, प्लीज स्टॉप दैट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। हाय तोशिका, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेटा, आई होप यू आर डूइंग गुड। बायोपेस्टिसाइड, ये वैसे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बट आई जस्ट वांटेड टू नो, यू टू नो कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सौम्यक, सौम्यक, डू नॉट आंसर इन द चैट, राइट?
देखो यार, यूट्यूब पे बहुत कम बच्चे मेरी बात सुनते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई आई मेक श्योर दैट जिनको मैं जानता हूँ भाई, वो तो मेरी बात मान ही रहे हैं, राइट? सो नो बडी विल आंसर इन द चैट बॉक्स. Yes. Okay. So trichoderma is a great example of a biopesticide. ठीक है. नीम भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. अजीत एंड सम्यक दोनों का मैसेज रिट्रैक्ट हो गया. आई डिड नॉट डू एनीथिंग. गॉड स्वेयर. ठीक है. चलो मूविंग ऑन. सर कट्टी, व्हाई दिस लेसन? अरे कम ऑन, आई हैव टू थ्रो वन और टू गूगली. Guys, I am, as I said, I'm really a boring person. So IPL, cricket, football, Messi, Ronaldo, I'm just a very boring person. So I'm all about writing and stories and poems, all of that sort of thing. So sports के बारे में I don't know much. मतलब you should do sports. It's just I am not a sports person, right? So मतलब all I know about IPL is the full form, Indian Premier League. Yeah, Harry Potter. Again, writing, right? So everything connected with literature, I'm there. Okay, this question important. एक मिनट का समय दिया है. At every 20 minutes, one bacteria divides into two. How many bacteria will be produced after 2 hours? 2 घंटे हैं आपके पास. How much? Come on, guys. Come on, guys. Be very, 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 very delicate in this. My favorite author, J.K. Rowling, obviously, I guess. I think. I think so. But I also love Cecilia Ahern. She has also written a great, great book, which I really love. So, will playing Minecraft be considered a sport? I don't think so. I did not understand it. कोई बात नहीं बेटा. Um, okay. Uh, guys, 10 बैक्टीरिया से मैंने चालू किया, right? तो सबसे पहले you have to understand how many divisions are going to be there, right? You have to understand how many divisions are going to be there. So you have 120 minutes and you have 20 minutes as a generation time, right? So 20 minutes needs to be 120 by 20, that is 6. So one bacteria goes mitosis, so 2 to the power 6. And because we started off with 10, so 10 into 2 to the power 6. That should be your answer, right? Okay. Because you got to use your brain and the hand coordination, but I think Minecraft is based on luck, right? I'm not sure. So see, if you're using a skill, speed, coordination, anything like that, I think that count. But Minecraft में शायद वही है ना, मतलब there's a डब्बा, you have to like do something with that. I'm not sure. I'm not sure. I just remember the name. I don't know how exactly it was. Okay, चलो guys, focus. देखो ये टाइपो एरर कौन है? It's a survival game. Uh, I have no idea how to characterize it, but if you say so, I'll believe so. ठीक है? If you say so, I'll believe so. Okay, which of the following plants are amphibians of the plant kingdom? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है. ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बारी मुझे मिला था, बट मैंने सिर्फ एक बार डाला है. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बेटा बहुत आता है. प्लीज इस क्वेश्चन को गलत मत करना. जो भी गलतियां कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, यानी वो बैठ के समोसा खा रहा था all 17 to 18 lectures of diversity. I like to play Temple Run. Okay, great. I've seen that. अच्छा. Okay. Typo error is samyak. Okay. So amphibians of the plant kingdom, bryophytes, and guys, it is called amphibians of the plant kingdom for all the wrong reasons. आपको हमेशा यही सिखाया जाता है. Amphibians इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है. Well, even pteridophytes need that. Even pteridophytes needed water. So bryophytes definitely made the first annexation of the land. और ये बात भी सच है कि उसके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है, बट टेराइडोफाइट्स को भी चाहिए होता है बेटा. बट क्या करें, हमने ऐसे ही पढ़ाया और हम ऐसे ही आंसर करेंगे. दैट ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. सर पेस्टिसाइड अगेन एक्सप्लेन. बेटा पेस्टिसाइड्स
एक तो केमिकल्स हो गया, है ना। पेस्ट मतलब एनिमल, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह, उनको दूर रखने के लिए आप केमिकल यूज करते हो, बट वो केमिकल अल्टीमेटली आपके पास वापस आता है, क्यों? क्रॉप्स के ऊपर है। क्रॉप को बिना धोए आपने खाया तो आप भी तो पेस्टिसाइड खा रहे हो। सो नाउ डेज people have started using neem, turmeric, these the trichoderma and certain even bacteria जो पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं, ठीक है। So please tell that when the forms are coming for NTC stage 1, it has started, I guess. बेटा देखो, अभी जो फॉर्म्स आएंगे ना, आप सभी फॉर्म्स को अटेम्प्ट करो। देखो, आप अभी कैरेक्टराइज मत करो स्टेज 1 स्टेज 2, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, राइट। सो राइट नाउ आई वुड से डू नॉट कैरेक्टराइज द फॉर्म। जैसे अभी वाला जो फॉर्म है उसमें एनसीईआरटी के हिडन स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन है, उसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है। आपको ऑलरेडी पता है कि एनटीएससी का एग्जाम में 15% वेटेज हो सकता है फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कंफर्म नहीं है अभी, बट हो सकता है। सो राइट नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसे मैंने कैसे कैरेक्टराइज किया है, ठीक है। ओके, चलो। गुजरात, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश आर आउट। अच्छा, ओके, आई डिड नॉट नो दैट। चलो, कम ऑन गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैलोफाइटा में ओनली एल्गी आते हैं, तो कैन यू सी द एक्वाटिक ऑफ इट इज एक्वाटिक? नो 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 नो, एल्गी अब बाहर भी होते हैं बेटा, दे आर नॉट एक्वाटिक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज एल्गी कैन इवन ग्रो आउटसाइड। स्टार्ट हो गए। अच्छा, उस फॉर्म्स की बात कर रहे हो? आई एम सो सॉरी, उस फॉर्म्स की बात कर रहे हो? आई डिड नॉट चेक ऑनेस्टली, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, बट जैसा सिमरन बता रही है, गुजरात, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का निकल चुका है। कम ऑन गाइस, ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। Okay. Okay, arthropods. Clearly, arthropods are invertebrates. Why? Because they don't have any vertebral column. Either आप कह लो कि आपका cartilaginous or bony. Sir, will it be beneficial to start NTSE preparation class 9? Definitely, definitely. बेटा NTSE में class 9 भी आता है। 30% questions आपके class 9 से आ सकते हैं, definitely. वही है, देखो, अगर आप competition की तैयारी कर रहे हो, ट्राई नॉट टू क्लासीफाई 9th एंड 10th। कोशिश करो कि अब क्लासिफिकेशन आप कम करो कि 9th क्या है 10th क्या है, आपके लिए सब बराबर है, क्योंकि देखो स्टेट के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है, राइट। सो एक खिचड़ी तो बनी जाती है, और जैसे जैसे चीजें नेशनलाइज हो रही हैं वैसे वैसे एवरीथिंग इज बिकमिंग अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अभी अभी आई थिंक तमिलनाडु और सम स्टेट वांटेड टू ऑप्ट आउट ऑफ नीट। आपने सुना होगा, ये न्यूज में आता। सम स्टेट, आई थिंक तमिलनाडु, वांटेड टू ऑप्ट आउट ऑफ नीट। एनटीए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इटसेल्फ सेड कि नीट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन सीबीएसई, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द स्टेट्स। आपने सुना था ना, वो एनटीए का स्टेटमेंट था कि एनटीए ने बोला था नीट इज बेस्ड ऑन ऑल द स्टेट्स। तो धीरे धीरे थिंग्स आर बिकमिंग मोर यूनिफॉर्म। जो मीटिंग का हमने डिस्कशन किया था, राहुल सर ने भी एक वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों के लिए, राइट। उसमें भी राहुल सर ने ये बताया था ना कि धीरे धीरे जो स्टेट्स के बीच में गैप है लेवल्स का, उसको ब्रिज किया जाएगा। द ट्रेनिंग विल स्टार्ट। यू डोंट नो द टाइमलाइन ऑफ एनी ऑफ इट, कब होगा कैसे होगा, बट इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब जो है ना, ये मत सोचो सिलेबस क्या है, एक ब्रॉड सिलेबस अपने दिमाग में रखो बस, राइट। चलो, मूविंग है। Which animals in the animal kingdom require the maximum amount of energy? So I'm confused in this question, but end तक समझ आ गया। Okay, चलो ठीक है। So sorry I missed the question. Come on guys. कौन सा एनिमल किंगडम है जिसको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? Fishes, amphibians, mammals, reptiles, birds, mammals, amphibians, reptiles. सर, नो वन इज टीचिंग हिस्ट्री। बेटा रश्मि मैम पढ़ा रही है ना सोशल साइंस। सानियम, रश्मि मैम इज टीचिंग सोशल साइंस, प्लीज रीच हर, राइट। रश्मि मैम सोशल साइंस पढ़ा रही है बेटा।
ओके सो गाइज आपको पता है बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ आर एंडोथर्म्स, यानी कि वो अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो दे आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी टुगेदर, राइट? सबसे ज्यादा एनर्जी यही लोग कंज्यूम अपना यूज करेंगे, ठीक है? चल बेटा देखो, इस साल होने के चांसेस बहुत कम है सिमरन, बट वंस अगेन इट्स बेटर टू प्रिपेयर, क्योंकि पता है दीज ओलंपियाड्स कैन रियली विन यू गुड स्कॉलरशिप्स, right? These Olympiads can really win you really great scholarships. Okay, chalo. Moving ahead, guys, everyone. So I'm doing correct, but speed is slow. Beta, doesn't matter. If you're doing correct, that is what is important to me, and that is what is important to you as of now, right? अगर आप 10th में हो, only then the speed is important for you right now. Sir, एक बार कोड बताना please. बेटा ये रहा कोड 38142394, ठीक है? 38142394. That's the code. Okay, chalo. Switching back. Moving on to the next one. The organ which spider used to prepare web. Thank you so much, Ajit, once again, beta. Thus, the organ which spider used to prepare the web. अब देखो ये बड़ा easy लग रहा है आंसर, right? It looks really easy. Yes, so it is spinnerets, spinning, right? Spinning, right? Sir, caudal fin, बेटा caudal fin back की तरफ होता है, right? Pectoral is शोल्डर की तरफ, यानी आगे की तरफ, पेल्विक पीछे की तरफ, काउडल पीछे और ऊपर होता है शायद, राइट? पेक्टोरल, पेल्विक एंड देन काउडल. सी गाइस, कभी कल आपको एडुकेटेड गेस करना पड़ेगा. समटाइम्स यू माइट हैव टू डू दैट, एंड इफ यू स्टडी थिंग्स रियली वेल इट विल वर्क आउट. देखो हर चीज जानना इम्पॉसिबल है, बट इफ यू यू नो बिल्ड सर्टेन पार्ट्स आउट ऑफ इट, इट्स टोटली पॉसिबल. विच इज द करेक्ट आंसर? स्पिनरेट्स बेटा, स्पिनरेट्स अजीत. The plant group that bear naked seeds, yani pehle to seeded plants and then the seed has to be naked, so naked seeds. Come on guys. Yes, naked seeds. Very good. So seeds plants are gymnosperms and angiosperms. Angiosperms have got the ovary. They have the ones who have the fruits, whereas the gymnosperms do not have any. So what is the correct answer? Straight away, gymnosperm. Okay? Sure. Moving to the next question, guys. So yeah, it really looks good. We have under 40 minutes, almost 17 questions हमने कर लिया. We have to be a little bit faster, but यहाँ क्योंकि there is a 15-second lag, तो इसलिए fast नहीं हो पाता. ऐप पे ज्यादा फास्ट होता है, बट क्या करें. The correctly matched organism and its excretory organ. Come on guys. Okay, so guys, for frog, it has to be something closer to the kidneys. For amoeba, it has to be body surface. Insects, on the other hand, can have Malpighian tubules. Earthworm have आपका nephridia, right? So that is why the correct option was earthworm. Arthropods and annelids both are in no. Arthropods insect वाली category है, plus something more, right? Annelida is earthworm, leech, ये सब annelids है. Right? Annelida is earthworms and leech. Arthropods is insects and crustaceans and prawns, all of that. So it was in B option. Let me check. है ना? Board of Appeals. Let me check. Pulja Simsim. I'm sorry. My bad. Option changed. Sorry. Change हो गया. All is good. All is well. Yeah. चलो. Moving on to the next one, beta. Okay.
सर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सप्लेन अगेन बेटा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या है ना, गट से निकलती होती निकल रहा चीज होता है। वंस अगेन इट्स अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। देखो जो शुरुआत हुआ था एक्सक्रीशन का, it always started as a basic filtration unit, right? If you remember protonephridia, that was just a cell doing some sort of filtration. Metanephridia, that was a better cell. Metanephridia or nephridia, that's just a better tube-like structure that is doing some sort of filtration and some very basic kind of reabsorption. Malphizian tubules भी वही करते हैं आपका, ठीक है। इंसेक्ट्स में होता है, गट से अटैच्ड होता है, ठीक है, गट से सींग जैसे निकलते हैं एंड वहां से फिल्ट्रेशन होते रहता है फ्लूइड्स का, ठीक है। नहीं बेटा, ग्लोमेरुलस जब तक आपका बेसिक लेवल ऑफ किडनीज नहीं आएगा तब तक ग्लोमेरुलस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वी कांट कॉल देम ग्लोमेरुलस, ऐसे समझ लो। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फंगल सेल वॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन, very very easy question. Come on guys, and guys make sure that you like the video, because that is how we try to measure everything, right? So our backend team keeps a track, so yeah, do remember to like the video, ठीक है। फंगल सेल वॉल किसका बना हुआ है? सो वी वेरी वेल नो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, राइट, इजी क्वेश्चन था। Correct, great. Guys, before we hop on to the next question, अगला question पे hop on होने के पहले, I'll just quickly take 2 or 3 minutes of your time and continue talking about the other kinds of subscriptions that we have for you. मैंने आपको प्लस के बारे में बता दिया था, then I have to just talk about iconic once more. बेटा iconic is like प्लस का बड़ा भाई, you get all the features, right? You get all the features of plus. Uske alawa you get a personal mentor which whom you can reach to and talk about any other problems. Live doubt solving bhi hoti hai. You get weekly reports, and you can also have mentors establishing connect with the parents. So if you're preparing for something really big or competitive, this is your go-to subscription. अब तरीका यहाँ भी वही है, category, महीना and code. Code डालते what happens? 10% instant discount, right? So guys, check these out because these are really cool things. And also if you find something inappropriate in one of the educators video, you can let us know and we can talk, we can take care of that as well. Also remember to follow me on the Unacademy app, because the app is a mine of special classes which are absolutely free. All you need to do is download the app and use the code SONA05. Guys, special classes miss mat kiya karo. We are almost about to finish the entire syllabus, right? हमारा लगभग देखो आज 25 तारीख हो गया, next class is going to be 29 September, right? तो basically हम आपका evolution का बस एक लेक्चर बचेगा, और फिर आपका बचा आर एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस वाला पार्ट, राइट? सो आई थिंक इवन बाय मिड अक्टूबर हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, राइट? सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट, ठीक है। Any questions, logistical questions before I start the questions once again? Sir, how parthenogenesis occurs? So guys, शुरुआत में, right, शुरुआत में when sexual reproduction was just around the cusp, right, अभी अभी बना ही था, तो remember that time we did not have the quantity of organisms, right? बहुत ज्यादा quantity नहीं थी, right? Life was tough back then. So parthenogenesis was a way out. Parthenogenesis में single sex भी जो है, by the development of the egg itself, egg only goes on to develop and form the whole being, right? ये पहले बहुत ज्यादा पाया जाता था। इवन आजकल जो एडवांस नहीं बोल सकते, जो यंगर स्पीशीज है, आई थिंक कोमोडो ड्रैगन्स में पाया जाता है, देखा गया है, शार्क्स में देखा गया है। सो वंस अगेन इट्स पॉसिबल, right? It's possible, it does happen. How does it happen? Weird genetics, ठीक है, okay, चलो moving ahead, चलो go ahead. Association of algae and fungi, algae और fungi का association
Yeah, sir, if an organism of haploid parthenogenesis tries to reproduce, would it gametes even go through meiosis? Say if an organism of haploid tries to reproduce. Beta, okay, now see, सुनने में भले वियर्ड लगता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड बीइंग्स कैसे होंगे. इट जस्ट साउंड्स वियर्ड. बट इफ यू लुक एट बीज, अगर आप बीज में देखें तो आपको पता है ना, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होते हैं, एंड आई थिंक मेल्स आर हैप्लॉयड एंड द क्वीन बी इज डिप्लॉयड, right? So queen bee develops from the fertilized egg, right? So although um, it sounds weird कि ऐसे कैसे होगा कि सेम स्पीशीज में some individuals are haploid and some individuals are diploid. This is where biology is remarkable. I mean, मतलब this is just absurd, right? ऐसा कैसे होगा कि आधे इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड हैं, आधे इंडिविजुअल्स डिप्लॉयड हैं, बट हमें ऐसा मिलता है. इनफैक्ट बी पॉपुलेशन में बहुत अमेजिंग तरीके से मिलता है. तो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स इट आउट. आई मीन, big deal, right? Big deal. They will produce gametes which would be via mitosis, and bus problem solved, right? So they are differently called phycobiont or mycobiont. No, no, that is lichen. lichen में जो fungal और algal partner है, वहां पे हम phyco और mycobiont कहते हैं. We are talking about mycorrhiza. Plant and fungi का association is mycorrhiza. I think question वही था ना, plant and fungi. So fungal filaments, they breach inside. Sometimes they remain in the cell wall space. तब हम कहते हैं ectomycorrhiza. कभी कल वो सेल के अंदर भी घुस जाता है, तब हम कहते हैं endomycorrhiza. So this is plant and fungi relationship, and ये relationship काफी strong भी हुआ करता था, and to some extent this was really important for the evolution of plants. अच्छा, algae and fungi था, then it has to be lichen. अगर question algae and fungi था तो lichen होगा, अगर fungi and plants था तो mycorrhiza था. I did not get the chance to read the question, so sorry. I was explaining something else. So fungi and algae, that's lichen. Phycobiont, mycobiont. अगर fungi and plants है तो mycorrhiza. ठीक है, depending upon whatever the question was, which I didn't get to read, sorry. ठीक है, आगे चलते हैं guys. 21, 37. Sorry, 21 out of 37. From which of the following animal is warm-blooded? Okay, I think you already know somewhat the answer is, right? So mammary glands, that is the key factor. आपको जैसे मेमोरी ग्लैंड सुनने को मिलेगा, आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए. अच्छा, इसकी बात हो रही है, right? Now then you'll cut down the two. Sir, this is Maharashtra. Yes, I think this is Maharashtra. बेटा बहुत सारे स्टेट्स क्लब्ड इन है, बहुत सारे स्टेट्स का पीवाईक्यूज क्लब्ड इन है, राइट? सो गाइज, वेट व्हाट, या गाइज, बैट को कब से पूछ होने लगा? Because that was wrong. See, I told you, I trick you in several places. Guys, I told you, I knowingly do the trick at certain places. Don't do this. Don't go for the tick mark. वो गलत हो सकता है, right? So थोड़ा सा भी सब penguin, yes, penguin has got a tail. Sorry, but penguin is a bird. I'm sorry. Wait. Sorry, my bad. My bad. Let me see the question once again. Sorry, my bad. I take that back. Penguin, pigeon. Okay, sorry. Sorry. Okay, so sorry. My bad. My bad. I know, I know. Yeah, bats में exactly तो you don't find tail, but again reminiscent of a tailbone would be there. So bat is a mammal. Question क्या था भाई? Yeah, now you people are confusing. What was the question? Question was वार्म ब्लडेड बर्ड्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं, सॉरी, और मैमल्स भी होते हैं. मेमरी ग्लैंड्स इज ओनली फाउंड इन मैमल्स. इन तीनों में मैमल सिर्फ और सिर्फ बैट है. पेंगुइन वंस अगेन इज अ बर्ड, पिजन बर्ड, टॉर्टोइस रेप्टाइल, तो बचा क्या? बैट. आंसर इज बैट, राइट? आंसर क्या होगा? बैट. ठीक है, सॉरी सॉरी, आई रेड इट रॉन्ग, माय बैड. चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. हाय हेमंग, गुड इवनिंग बेटा. चलो, very good. Sir, 22 questions in 1 hour.
वाओ दैट्स गुड राइट, लेट्स ट्राई टू मेक इट 25। कोशिश करते हैं एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो हिट ऑफ हो ही जाए। अगर नहीं हुआ तो आगे किसी और क्लास में कर लेंगे, नो वरीज। चलो, प्लानेरिया इज केप्ट इन विच ग्रुप? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लानेरिया को आप किस ग्रुप में रखते हो? सिलेंडरेटा, नेमेटोडा, एनेलिडा या प्लैटीहेलमिंथस? कम ऑन गाइस। सर विल वन शॉट वीडियो आल्सो कम फॉर द चैप्टर? तोशिका वन शॉट वीडियोस आएगा, बट चैप्टर वाइज आप समझ सकते हो इट बायो में इम्पॉसिबल क्यों है। अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस का वन शॉट वीडियो बनाऊंगा तो क्या होगा, आप ही बताओ। इतना बड़ा चैप्टर है, उस वन शॉट वीडियो में कुछ कवर नहीं होगा। तो लाइफ प्रोसेस वाइज वन शॉट वीडियो आएगा, जैसे न्यूट्रिशन इन वन शॉट, ट्रांसपोर्टेशन इन वन शॉट, ऐसे करके आ जाएगा। डाइवर्सिटी में किंगडम वाइज आ सकता है, जैसे कि प्लांट्स इन वन शॉट, invertebrates in one shot, vertebrates in one shot, right? So kind of like that. ठीक है, चलो। सर मोनोकोट एंड बेटा इट्स 15-20 मिनट का वीडियो। मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट का वीडियो कल रिलीज होगा, ठीक है। सुबह रूट होगा, रात में स्टेम होगा, ठीक है। इट्स जस्ट 15 से 20 मिनट। वो लाइव लेक्चर्स नहीं है बेटा, संडे को मैं छुट्टी पे रहता हूँ। इट्स नॉट लाइव, इट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। अजीत, आप कल के वीडियो की बात करें ना बेटा, सो दोज विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा। चलो, ब्रायोफाइट गाइस टाइपिंग एरर है, इट इज सपोज टू बी ब्रायोफाइट नॉट ब्रेयोफाइट, ठीक है। इट्स ब्रायोफाइट नॉट ब्रेयोफाइट। टाइपिंग एरर था, और बिकॉज आई जस्ट कॉपी पेस्टेड, सो दैट्स हाउ इट इज। सो you'll get to see this। आपको एनटीसी एग्जाम में टाइपिंग मिस्टेक्स, क्वेश्चन मिस्टेक्स सब मिलेंगे, राइट। Yeah, someone like you and me are setting this question. So I guess when we people get familiar, so we start caring for how to type it correctly. So guys, first of all, the answer to the question is a clear cut moss, right? Guys, ये बात याद रखना, सारे mosses bryophytes नहीं होते, but a good mosses are generally classified as bryophytes, ठीक है। Remember, not all things that we call moss comes under the bryophyte category. Okay, dissimilarity found in aves and mammals is, aves और mammals के बीच में जो key dissimilarity है वो क्या है? Eggs, warm blooded, breathe through lungs, four chambered heart. Now I know you people will struggle with this question, and that is totally correct. अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, बट क्या करें, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। सो गाइज, आपको पता है द प्रोटोथीरियंस, एकिडना, एंटिएटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस, है ना। ओके, so they are egg laying mammals, right? That's why. Sir, will you answer one question? Definitely beta. Sir, respiratory cycles also difference. True, respiratory cycle का भी difference है, they have double circle respiration, right? तो उनके पास डबल रेस्पिरेशन है, अपने पास नहीं है, बट उन्होंने बोला था ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, तो लंग्स को लेके हमने चलो उसको माफ किया, ठीक है। बट लेइंग एग्स हमें नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है, राइट। सो समटाइम्स you'll have to kind of pick up the best question, best option, ऐसा ही है बेटा। Okay, leaderboards changing. Cool, cool, cool. Okay, great. Question 25. I think we'll hit our threshold. हमने 9 बजे के पहले 25 questions कर दिए. That's cool. The largest herbarium in India. अभी आया हुआ है तो मैं क्या करूं, है ना। मुझे भी नहीं पता था, honestly नहीं पता था, पता होना चाहिए बट पता नहीं था। As I said, I have really bad memory, so okay, what was the answer? None of the options are correct. ऐसे कैसे हो सकता है? आई थिंक द आंसर इज कलकत्ता। गाइस, द आंसर इज कलकत्ता। आई थिंक कलकत्ता में वो सबसे बड़ा है, ठीक है, बट डबल चेक कर लेना। सो गाइस, समटाइम्स यू गेट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई नो इट्स सॉर्ट समहाउ डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम, बट कोशिश करना। अंडर विच ऑफ द ग्रुप्स आर डायटम्स इंक्लूडेड?
डाइटम्स को कहाँ इंक्लूड किया गया है? क्वेश्चन फ्रॉम उड़ीसा। बेटा ऑप्शंस तो आया होगा, ऑप्शंस तो पक्का आए होंगे बेटा। सर व्हाट वाज दैट वी हैव नॉट आवर जीके स्ट्रांग? बेटा कलकत्ता है, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक इट इज इन कलकत्ता। बेटा आंसर शायद कलकत्ता है। सिलिका बेटा, नॉट सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन बेस जब आप बोलते हो तो वी जनरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेल्स, सो सिलिका, राइट। सो वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज प्रोटिस्टा, है ना, आपके प्रोटिस्ट्स दे आर गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, क्वेश्चन 27। ओके, लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। जेलीफिश, आखिरी क्वेश्चन और इतना आसान। So guys, there won't be a leaderboard obviously because हमने पूरा मेंटी कंप्लीट नहीं किया है, but you should be really proud that we completed 27 or 28 questions in 1 hour. Special classes में this is a totally different game because वहाँ पे there's no lag between you and me, right? तो यहाँ 15 सेकंड का lag के कारण I have to like keep it 30 seconds. Have you ever got a bad scolding from a teacher? Today my Hindi scolded me a lot. Better believe me, sometimes you do get scoldings and it's good. Believe me, it feels really bad when you get scolding and if you're a student who never gets scolded and you get a scolding, it feels really bad. But believe me, that something teaches you a lifelong lesson, right? Teaches you a lifelong lesson. Like I was a so-called good kid in my room, in my class. So my favorite teacher, Ma'am Achla, she used to teach us chemistry. So वी हैड टू कैरी दी प्रैक्टिकल नोटबुक्स आउट। तो मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट था, मैंने सबमिट कर दिया था, बट टू ऑफ माई फ्रेंड्स देयर प्रैक्टिकल्स वर नॉट कंप्लीट एंड हम वी हैव टू स्टे बैक। हमें स्टे बैक करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि सेकेंड ट्रिप आती थी बस की, फिर हमें लेके जाती थी। सो वी वर काइंड ऑफ वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो ऐसा हुआ कि आई वॉज इन द सेकेंड ट्रिप, सो वट हैपेंड वॉज आई हेल्प दोज फ्रेंड्स बाय जस्ट पुलिंग आउट माई, मैंने मैंने पहले सबमिट किया, फिर प्रैक्टिकल नोटबुक लिया, फिर उनको घर ले जाने को भी दे दिया कि भाई ले जाओ घर में कॉपी कर लेना, अगले दिन सबमिट कर देना। बट अगले दिन द मैम केम फर्स्ट एंड देन शी फिगर्ड इट आउट कि कॉपी वहां से निकल के वापस जमा हुई है। तो देन शी वाज लाइक कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। And that day, she taught me a lesson actually कि by being friendly, I was not being a true friend. I was just being friendly with them कि हाँ भाई ठीक है, they forgot. But there's two things. If you really value your hard work, you have to respect it enough to understand that those who don't have to pay for it. And second, if you really are a true friend, you have to let them take a fall. अगर वो गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे? Right? So guys, whenever you get scolded, pat on your back. Why? Because आपने गलती की और आपको सुधारा गया. You are lucky. Right? आपने गलती की और आपको सुधारा गया. Right? Okay, so I hope Simran today's episode with you as well taught you something. ठीक है यार, और स्कूल की डांट ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिलीव मी व्हेन आई से इट, स्कूल की डांट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आपको कई ऐसे लेसन्स सिखा जाती है जो आपको कॉलेज नहीं सिखाता, राइट, यूट्यूब नहीं सिखाता। सो प्लीज प्लीज मेक श्योर दैट you value your teachers. Sir, appreciate me please beta. I am so disciplined. Okay, so guys, see, you all are good kids. आप सभी जो हो, all of you are good kids. Just keep on trying to be better and better and better. And remember, life might throw you down, but you have to get up back. You have to change the world to be a better place, right? Okay, chalo guys. Hi. Okay, guys. So this is where how to manage boards and NTSE both. Better see, देखो, please don't differentiate इतना यार। वन ऑफ द साइकोलॉजिकल मिथ इज कि हम इतना ज्यादा बाउंड्रीज फॉर्म कर देते हैं कि हम दो चीजों के बीच की सिमिलैरिटी को देखना भूल जाते हैं। और आप लोगों के साथ जो है यही हो रहा है। आप एनटीएससी और बोर्ड को इतना अलग समझते हो, बेटा कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, राइट? सो ट्राई टू
bring all of it, right? So there are 37 questions. Yes beta, we will be doing the rest of them in the forthcoming class. ट्यूसडे को जो भी क्लास होगी ना, ट्यूसडे वेंसडे को बाकी के क्वेश्चंस हम उस दिन कर लेंगे, ठीक है? चलो, सो गाइज डू चेक आउट दी स्पेशल क्लासेस एज वेल, बिकॉज स्पेशल क्लासेस में कोई लैग नहीं, कोई पोल का टेंशन नहीं होता, वहां पोल्स आर वेरी प्रॉम्प्ट, देयर इज लीडर बोर्ड, देयर इज रियल टाइम इंटरेक्शंस, ऑल ऑफ दैट देयर, right? So remember, Sona 05 gets you access to special classes and it does get you an extra 10% off as well, right? So try to manage the schools and an academy in a balanced way. थोड़ा सा आपको बैलेंस वे में करना पड़ेगा. It's not easy, but it's possible. ठीक है? So guys, download the app from the Google Play Store and App Store. You can use the Telegram, Sona Singh Academy and NTSE Foundation, जो Unacademy का है. These telegrams can help you get to connected with your teachers. Make sure that you like this session, share it with your friends and subscribe करना मत भूलना, ठीक है? So guys, go ahead, click on the bell icon as well. उससे आपको सारे notifications आते हैं, ठीक है? So I'm folding the day for here. This is where my weekend starts and I hope yours as well, right? So bon weekend, have an amazing weekend. Go break a leg, play some sport, and do not put the sports on a backbench. Sports are important, guys, right? So play a sport, learn a new skill, do a hobby, and I'm very sure you'll shine like the gems you are. Okay? Thank you so much, guys. I'll see you Tuesday. कल के recorded videos को मत छोड़ना. Spend 20 minutes of your time to watch them. ठीक है? Bye bye. Take care. Good night. See ya.